Very good morning, my dear students. So today we are going to start with NEET paper solution 2017. Okay. So far we people have done NEET solution of 2019 and 2018 paper. Now we are going to start with NEET solution of 2017 paper. Okay, 2017 paper. So here on screen, question number 1. Double fertilization is exhibited by, yes, we know this thing, double fertilization is exhibited by flowering plant, and that is our angiosperm. So 91, answer number 4, angiosperm is going to come. What is double fertilization? In which there occurs fertilization, in the sense fusion of one male gamete with female gamete, that is what we call as syngamy, and there occur fusion of male gamete with secondary nuclei, that is called as your triple fusion, है ना. So if I am talking about double fertilization, तो यहाँ पे होती है syngamy and triple fusion, correct. So 91, answer number 4 is going to come. Let's look out question number 92. Which of the following are found in extreme saline condition? Archibacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, Mycobacteria. Dear student, एक्सट्रीम कंडीशन पूछा गया है ना. तो दिस इज अवर मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरियाज विच वी कॉल एज आर्ची बैक्टीरिया, है ना. आर्ची बैक्टीरिया की डिफरेंट कैटेगरीज वी पीपल हैव अंडरस्टूड. थर्मो एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स आर द वन हु लव्स सलाइन कंडीशन, राइट. पूछा क्या गया है? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन. हेलोफाइल्स कम्स अंडर योर आर्चीबैक्टीरिया, एंड हियर कम्स योर आंसर नंबर 1. 92, आंसर नंबर 1 is going to come. Let's look out question number 93. Select the mismatch. Mismatch आपको select करना है. Frankia ulnus. What is Frankia? It's an, yes, symbiotic association, है ना, with योर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक आलनस. सो फर्स्ट जो मैच है वो करेक्ट है. सेकेंड मैच देखो, रोडोस्पाइरिलम एंड माइकोराइजा, ये मैच करेक्ट है क्या? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माइकोराइजा, तो वी नो दिस थिंग, इट इज एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट. एंड व्हाट इज रोडोस्पाइरिलम? रोडोस्पाइरिलम तो बेटा एक नाइट्रोजन फिक्सर है ना. रोडोस्पाइरिलम, व्हाट इज रोडोस्पाइरिलम? इट्स योर एनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना. तो रोडोस्पाइरिलम, माइकोराइजा, ये मैच गलत है. हावेवर, लेट्स लुक नंबर 3. एनाबेना, नाइट्रोजन फिक्सर, येस वी नो दिस थिंग. नोस्टॉक, है ना. एनाबेना, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, yes, due to presence of specialized cell called as heterocyst. Rhizobium is symbiotic to alfalfa, yes, the same is given in our NCERT book. अच्छे से दिया है ये, है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, 93, select the mismatch. तो that's your Rhodospirillum mycorrhiza. Am I clear? So answer number 2 is going to come. Let's look out question number 94. Which is the criteria for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? Question from biotechnology, dear students. If we are talking about your gel electrophoresis, तो we are using basically agarose gel, है ना. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ DNA, तो वो किस पे डिपेंडेंट होती है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ DNA. छोटा अगर फ्रेगमेंट है तो इट गोज़ फार्दर, इट कवर्स मोर डिस्टेंस. इफ़ द फ्रेगमेंट इज़ लार्जर, है ना, तो इट विल नॉट गोइंग टू कवर मच डिस्टेंस. क्लियर? तो लेट्स लुक आउट द 4 स्टेटमेंट्स विच आर गिवन. द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज, फार्दर इट मूव्स, ये गलत है. अगर फ्रेगमेंट साइज लार्ज है तो भाई वो फार्दर मूव नहीं करेगा, वो नज़दीक ही रहने वाला है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ रॉन्ग. लेट्स लुक आउट स्टेटमेंट नंबर 2. Smaller the fragment size, farther it move. Yes, this is the criteria, है ना. I can say अगर fragment size छोटा है तो it will cover more distance. Okay. So 94, answer number 2 is going to come. Right? चलो next one, 95. Attractants and rewards are required for. चलो भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऑफ योर पॉलिनेशन, है ना. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. अट्रैक्ट करने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए, है ना, प्लांट्स आर यूजिंग व्हाट? नेक्टर. एंड देर आर सर्टेन प्लांट विच ऑफर्स safe
place for laying eggs to insect to bring about pollination. हाँ या ना? हाँ. So pollination by insect is called as, let's look out, 1, 2, 3 and 4, anemophily, entomophily, hydrophily, clistophily. तो what it is? क्या आंसर आएगा? अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए चाहिए ये? फॉर दोज प्लांट हु अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, द पॉलिनेशन विच अकर्स बाय इंसेक्ट. तो दैट इज योर एंटोमोफाइली माय डियर स्टूडेंट. सो 95 आंसर नंबर 2 इज गोइंग टू कम. Question number 96. Which of the following is made up of dead cell? Okay. डेड सेल मानी क्या होता है? वन हु डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, है ना, वन हु डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म. एम्प्टी सेल्स आई कैन से आर योर डेड सेल. लेट्स लुक आउट द 4 ऑप्शंस विच आर गिवन. जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल है, फैलम. यू नो व्हाट इज फैलम? फैलम इज नथिंग बट योर कॉर्क. चलो देखो 4th वन, फ्लोएम. फ्लोएम इज ऑल्सो द लिविंग वन, राइट, एक्सेप्ट सम पार्ट. फैलम की अगर आप बात करो तो फैलम क्या है बेटा? इट्स योर कॉर्क सेल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, है ना. वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड, दैट वी पीपल हैव अंडरस्टूड. कॉर्क कैम्बियम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो दिस occurs in cortical region, in cortex region it arises, है ना, and it forms new cells outside and inside. The cell which are outside are called as cork or they are called as phallum. They are very thick cells, right? There is deposition of suberin in them and they are dead cell. ठीक है. And on inner side there will be formation of your secondary cortex. क्या बनता है बेटा? Secondary cortex बनता है. ठीक है, वो लिविंग सेल है. तो 96 आंसर नंबर 3 फैलम इज गोइंग टू कम, राइट. चलो लेट्स लुक आउट क्वेश्चन नंबर 97. विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लाइबोकर्न सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम? ओके, एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम पूछा है. कौन सा सेल क्रिप्स ऑफ लाइबोकर्न का ये सिक्रीट करता है? तो आंसर कम्स योर पेनिथ सेल, राइट. जो पेनिथ सेल है, it's going to secrete lysozyme and this lysozyme is basically acts on bacteria. It's going to kill bacteria, so it's an antibacterial lysosome. Am I clear? Okay, so 97 answer number 2 penith cell is going to come. Question number 98. Adult human RBCs are enucleate. Which of the following statements is or are most appropriate explanation for this feature? Okay, सोचो अब ये आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. yes this is true. why it is so? क्यों नहीं न्यूक्लियस होता? क्योंकि it can accommodate more oxygen, ऑक्सीजन ज़्यादा उसमें आ सके, इसकी वजह से आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है. मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है ना. ऑक्सीजन कब ज़्यादा होगा? इफ़ ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन इज मोर. सिंपल एज दैट, है ना. मैंने आपको आंसर बोला कि भाई क्यों एडल्ट ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. नाउ लेट्स लुक आउट द स्टेटमेंट्स विच आर गिवन. फर्स्ट वन, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस. ऑप्शन बी, दे आर सोमैटिक सेल. Option C, they do not metabolize. Option D, all their internal space is available for oxygen transport. Only option D is correct. Only option D is correct. Am I clear? So देखो, अब देखो options 1, 2, 3 and 4 में से क्या आना चाहिए? It's your answer number 1, only D. ठीक है. So question number 98. Answer 1 is going to come. Let's look out question number 99. The hepatic portal vein drain blood to liver from intestine, है ना. hepatic portal vein है, वो कहाँ से कहाँ blood ले जाता है? From intestine to liver. From intestine to liver, we know this thing. So 99 answer number 4 intestine is going to come. Let's look out question number 100. The final proof for DNA as genetic material come from experiment of, yes, this is Hershey and Chase, right.
तो डियर स्टूडेंट, ग्रिफिथ, हर्शी एंड चेस, एवरी, मैक्लिओड, मैकार्टी, हरगोबिंद खुराना, ठीक है, ऑफ दिस पूछा क्या गया है, फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो दैट वाज प्रोवाइडेड बाय अवर हर्शी एंड चेस. Okay, so 100, answer number 2, Hershey and Chase is going to come. Okay, question number 101. Which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals, and can survive without oxygen? Read the options very carefully. Bacillus, Mycoplasma, Pseudomonas, Nostoc. Dear students, Bacillus, Pseudomonas, bacteria, they are having cell wall. Nostoc, it is also having cell wall, है ना. Mycoplasma, belonging to your kingdom Monera. Mycoplasmas are the smallest living prokaryotic organism. They can live without oxygen in anaerobic condition. So direct answer for 101 is 3, Mycoplasma. Let's read question number 102. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? अब mitosis में क्या होता है, that we need to know. सबसे पहले तो होगा क्या, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. द ऑप्शन फर्स्ट इज कॉमन इन ऑल 4 स्टेटमेंट. देखो, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन. सो बेसिकली व्हाट इज कंडेंसेशन? क्रोमोसोम गेट्स कंडेंस सो दैट इट कैन बी विजिबल, so that it can be visualized. Am I clear? Followed by which nuclear membrane जो होती है that is going to disappear, followed by which in metaphase your chromosomes are going to come at the center, come at the equator, that is what we say as congregation, followed by which centromere splits, followed by which centromere जो होता है, मेटाफेज के बाद क्या आता है, एनाफेज में centromere of chromosome is going to split, forming daughter chromosome, है ना, forming daughter chromosome, followed by which the daughter chromosome segregate का मतलब होता है they are going to separate, they are going to move towards opposite pole, followed by which in telophase we are going to get 2 daughter nuclei. तो क्या बोला मैंने आपको, कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसैम्बली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर मेटाफेज, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन दोनों एनाफेज, फॉलोड बाय टेलोफेज. सो 102, आंसर नंबर 2 इज गोइंग टू कम. देखो सीक्वेंस, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसैम्बली, arrangement at equator, centromere division, segregation, followed by telophase. So 102, answer number 2 is going to come. Let's look out question number 103. Which one of the following statement is correct with reference to enzyme? Okay dear students, we know this thing कि भाई जो हेलो एंजाइम है, हेलो एंजाइम क्या है, हेलो एंजाइम इज इक्वल टू कॉम्बो पैक ऑफ अपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन फैक्टर. Non-protein factor, co-factor we are talking about, so that is nothing but your coenzyme we can say, है ना. co-factor दो तरह के हमने पढ़े थे. if they are tightly bound, so that is prosthetic group, and if they are organic compound they are called as coenzyme, है ना. so hello enzyme is equal to apoenzyme plus coenzyme I can say. So dear student, 103, answer number 2 is going to come. Let's look question number 104. During DNA replication, Okazaki fragment are used to elongate. Okay, Okazaki fragment है. DNA replication पूछा है, chapter 6 question class 12 it is, है ना. During DNA replication we are having 2 strand synthesized, leading strand and lagging strand. We know leading strand is continuous one and lagging strand is discontinuous one. So जो fragments बनते हैं lagging strand में, that is what we call as Okazaki fragment. Done. And it is in direction opposite to replication fork. Right? We people have understood mechanism of DNA replication. So answer number, I mean to say 104, answer number 4 is going to come, the lagging strand away from the replication fork. So 104, answer number 4 is going to come. Let's look 105.
Which of the following are not polymeric? Polymer, we know बहुत सारे monomer when they combine results in formation of polymer. Let's look out the options given. Nucleic acid, तो we know भाई nucleic acid क्या है? Nucleic acid is a polymer of nucleotide. Protein is polymer of amino acids. Polysaccharides are polymer of monosaccharides. Lipids are lipids polymer? No. Lipids are fatty acid plus alcohol. Lipids are made up of fatty acid and alcohol, है ना? So 105 answer number 4 is going to come, and that is our lipids. Question number 106. The region of biosphere reserve which is legally protected where no human activity is allowed is known as core zone. We know this thing. Biosphere reserve, in situ conservation, है ना? Biosphere reserve are having 3 zones: core zone, buffer zone and transition zone. If we are talking about your core zone, so in this total protection is given, no human activities are allowed. Buffer zone, some activities related to research and education is allowed. In transition zone, with permission of legal authorities, human settlement, cultivation, grazing type of activities are allowed. What is the question about where no human activity is allowed? So 106 answer number 1, core zone is going to come. Question number 107. A dioecious flowering plant prevent both. Dioecious flowering plant. What do you understand by the dioecious plant? Dioecious plant are one in which unisexual male flower and female flower are born on 2 different plants. Okay. Male flowers एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट प्लांट, है ना? तो अगर प्लांट ऐसा है तो वी कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज योर जीटोनोगैमी. व्हाट इज ऑटोगैमी? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर. व्हाट इज जीटोनोगैमी? ये क्या था, हमने क्या पढ़ा था? मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स. फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल बट दे आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, है कि नहीं? यस, दैट इज योर जीटोनोगैमी. डाइशियस प्लांट बोला गया है तो वी कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी. सो 107 आंसर नंबर 2 इज गोइंग टू कम. 108 टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पिनियल ग्लैंड, कॉर्पस कार्डियकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एलेटम. कौन सी है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड? इट्स योर कॉर्पस ल्यूटियम. व्हाई इट इज सो? Corpus luteum, dear student, is responsible for releasing hormone called as progesterone. है कि नहीं? Yes. So that occurs temporarily every month, right? So 108 answer number 3, corpus luteum is going to come. 109 match the following sexually transmitted disease with their causative agent. चलो मैच करना है आप सबको. गोनोरिया, इट्स योर निजेरिया गोनोरिया, आपने सुना होगा, है ना? सो गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज योर निजेरिया. सिफिलिस, इट इज अगेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज योर ट्रिपोनीमा. ऑप्शन 3. ए का 2 आया, बी का 3 आया. जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल वार्ट्स डियर स्टूडेंट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सो सी का 4 आया. एंड एड्स एवरीवन नोज इट्स कॉज्ड बाय HIV, सो डी का 1 आया. A2, B3, C4, D1. ऑप्शन देखो, इट्स ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1. इट्स ऑप्शन नंबर 1. So 109 आंसर नंबर 1 is going to come. Let's look out. Question number 110. Transplantation of tissue or organ fails often due to non-acceptance by the patient body. Which type of immune response is responsible for such rejection? Dear students, the same question we people have understood in 2019 NEET paper. Transplantation, organ transplant, reject किसकी वजह से होता है? It's your T cells. And T cells are going to impart cell mediated immunity. So 110 answer number 2. That is your cell mediated immune response is going to come. So here is set of
20 MCQs, first 20 MCQs we people have done है ना. Now see you in next section with next set of MCQ. Bye everyone.